Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mobeen Naz. I am from MK Preparations और आज हम डिस्कस करेंगे जी FPSC SST पेपर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर फॉर द सेकेंडरी स्कूल टीचर दैट वाज हेल्ड ऑन 31st of July 2022 यानी 2022 में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था फॉर द SSTs। तो चलिए जी इसको पेपर को हम डिस्कस करते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू मेंशन हियर कि इस पेपर के जो है वो दो बेसिक पार्ट्स हैं। एक है इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है, और दूसरा पोर्शन है जी पेडागोजी का फॉर प्रोफेशनल। एंड फर्स्ट इंग्लिश का जो पोर्शन है आपके पास उसमें 20 क्वेश्चंस हैं और जो रिमेनिंग प्रोफेशनल है पोर्शन उसमें पेडागोजी के 80 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पोर्शन इज इंग्लिश एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज we need a computer dash a huge memory. We need a computer having a huge memory. Okay जी, ये prepositions आपने choose करनी है, correct. Number 2, as soon as I saw her I knew that I had met her before. Okay जी, तो ये इसका आंसर है। 3, two boys are dash in looks but not in personality. Two boys are alike in looks, यानी दो लड़के दिखने में एक जैसे हैं but not in personality. 4, she lives dash Albert Street. She lives in Albert Street, तो वो Albert Street में रहती है। 5, Amir is dash like a father to me. Amir is almost like a father to me, यानी आमिर जो है वो मेरे लिए बिल्कुल बाप की तरह है, तो almost. Number 6, I like to be dash for short periods. I like to be alone for short period, कि मैं कुछ अरसे के लिए अकेला रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Number 7, I was wondering if you dash be interested in a game of tennis. I was wondering if you would be जो है वो इसके साथ आएगा, interested in a game of tennis. 8, I wish today would be Sunday. I wish today would be Sunday. Okay जी. Number 9, I waited for her dash 6 o'clock but she did not come. I waited for her till 6 o'clock, कि मैंने 6 बजे तक उसका इंतजार किया, till 6 o'clock. 10, she dash be here tomorrow. She might be here tomorrow. Okay जी. Number 11, all dash you say is certainly true. All that you say is certainly true. Number 12, Bernard developed a new dash in heart surgery. Bernard developed a new technique. हम इसको methodology या process नहीं कहेंगे. And this is called a technique in heart surgery. 13, I dash be rich one day. I will be rich one day. तो ये simple आप future tense इसमें use करेंगे. I will be rich one day. 14, I have known her dash 3 days. I have known her for 3 days. तो इसमें क्योंकि exact time mention कर दिया गया है for 3 days. 15, I can dash somebody is coming. I can hear somebody is coming. 16, the repairs are dash to cost more than you think. The repairs are expected to cost more than you think. 17, he is enjoying his dash job. He is enjoying his latest job. 18, dash handwriting cannot be easily read. Illegible handwriting cannot be easily read, जो पढ़ी ना जा सके. 19, a white elephant means something useless and costly. A white elephant का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि इस्तेमाल में ना आने वाली हो और महंगी भी हो. Useless and costly. 20, normally an individual thunderstorm dash about 45 minutes. Normally an individual thunderstorm lasts about 45 minutes. Okay जी, the next portion is professional, जिसमें आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हैं about 80 questions. So the first question is 21. The Article 25A of the Constitution obligates to provide
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 10th क्लास तक जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो है वो के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस थी उनमें 10th क्लास बिल्कुल मेंशन नहीं थी, सो दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज जो है वो आपकी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो आई हैव मेंशन्ड हियर कि 10th क्लास करेक्ट आंसर है, बट नन ऑफ दीज आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे 10th क्लास की ऑप्शन मेंशन नहीं है। 22 डैश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट्स एम्फोसिस ऑन स्टडिंग द होल ह्यूमन बीइंग। तो ये जो थ्योरी है इसे दिस इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। 23 who said that learning includes both acquisition and retention। तो ये फ्रेज या ये सेंटेंस किसने कहा था जी? स्किनर ने 1969 में। 24 the way knowledge is created in the mind of learner is called constructivism। यानी एक ऐसा तरीका जिससे लर्नर के दिमाग में जो है वो इल्म की तख्लीक होती है, ठीक है, उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। 25 going from specific to general is called inductive thinking, और इसके ऑपोजिट होता है deductive, in which we move from general to specific। 26 the term philosophy means। तो philosophy का मीनिंग भी जो है वो आपको ऑलरेडी पेडागोजी की जो है वो पेडागोजी का हर टॉपिक उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है वो एमके प्रिपरेशंस के चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे पेडागोजी या प्रोफेशनल सेगमेंट में से पोर्शन में से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपके उन पेडागोजी की हर टॉपिक की वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि हमने पेडागोजी के जितने भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं सारे टॉपिक्स तकरीबन हमने कवर किए हैं, और उन सब टॉपिक्स के एंड पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं आपके साथ। वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास्ट पेपर से लिए गए हैं, और ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर पास्ट पेपर्स। तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो जो आपको यहाँ दिखाई देंगे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी पेडागोजी के टॉपिक्स की वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। ओके, सो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर एवरीवन। तो फिलॉसफी का जो मतलब है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। फिलॉसफी का मतलब होता है जी लव ऑफ विजडम। 27 dash is the ability to use knowledge, intelligence। 28 the major objective of Aligarh movement was to promote scientific look। 29 education conference 1947 was held in Karachi। ये जो कॉन्फ्रेंस थी 1947 एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये कराची में हुई थी, बट आपके पास जो ऑप्शंस थे उसमें कराची मेंशन नहीं था, तो दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज जो है ये हमारे पास आंसर है अकॉर्डिंग टू योर पेपर। 30 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली आर डैश एंटरप्राइज इज अ सोशल एंटरप्राइज। 31 dash is the basic function of administration, planning is the basic function of administration। 32 role personality theory was presented by, so this theory was presented by Stockdale। 33 dash function of administration involves delegation of responsibility to employee, तो उसे हम कहते हैं organizing function of administration involves delegation of responsibility to employee। 34 step 2 in clinical supervision is analysis। क्लिनिकल सुपरविजन में जो सेकंड पॉइंट है वो एनालिसिस है। 35 Hawthorne studies were conducted between 1927 and 1932। 36 dash is a regulatory process directing the activities of an organization goals to achieve specific goals, so controlling is a regulatory process। 37 एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स, अच्छा जी अब यहाँ पे आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस थी। एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, एक ये हमारे पास ऑप्शन है। एट सेकंड ऑप्शन थी जी डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस थी, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो उसकी डेवलपमेंट में हेल्प हो सके, और दूसरा हम जो है वो
बाकी जो अफेयर्स हैं, स्टूडेंट अफेयर्स, टीचर अफेयर्स, उनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफिक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये दोनों जो हैं, ये एजुकेशनल सुपरविजन का मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास, बोथ इसका करेक्ट आंसर है। 38, टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान। 39, अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस थी, ए एंड बी। दी फर्स्ट वन इज ए, लॉन्ग टर्म प्लान, एंड द सेकंड वन इज बी, शॉर्ट टर्म प्लान। तो आपके पास यहाँ पे दोनों आंसर्स हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान को हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान भी कहते हैं। 40, फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू set an objective. 41, short-term plans in education are generally of dash years. So 1 to 3 years. Short-term plans जो है वो एजुकेशन में 1 से 3 साल तक के होते हैं। 42, who said this? अब ये जो नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है, ये किसकी स्टेटमेंट है जी? एजुकेशनल प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ relational systematic analysis to the process of educational development. So it was presented by P.H. Combs. 43, planning aims at creating an adequate dash situation. Planning aims at creating an adequate future situation. 44, systematic change in the mental processes that underline all learning and performance referred to as cognitive development. जिसमें mental processes जो हैं वो चेंज होते हैं, और यानी मेंटल प्रोसेसेस की बेस पे परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। 45, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल psychology is to contribute to an understanding of sound educational practice. 46, curriculum is all the learning experiences. जितने भी learning experiences हैं उन्हें curriculum कहा जाता है जी। 47, the thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as innovation, यानी इसको हम इजाद कहते हैं। कोई भी ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जिससे कि कोई ना कोई नया आइडिया प्रोड्यूस हो या डेवलप हो, तो उसे इनोवेशन कहा जाता है, इजाद कहा जाता है। 48, which one of theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S? तो ये है जी स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। 49, moods are formed during infancy. ओके 49 के बाद है जी 50, विच इज द मास्टर इमोशन? फियर, खौफ जो है वो एक मास्टर इमोशन है, यानी मास्टर जज्बा है। 51, a dash is the organized pattern of behavior which the child develops when he is engaged in any activity. So scheme, a scheme is the organized pattern of behavior. 52, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक ने जो है ये थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रेजेंट की थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। 53, जंग इन 1933 classified the unconscious in two types, primary or racial unconscious and dash unconscious. तो second type है जी personal in unconscious. 54, effectiveness of curriculum is determined by इवेल्युएशन, करिकुलम कितना इफेक्टिव है, उससे क्या आपको आउटकम मिल रही है, ये जब आप स्टूडेंट को इवेल्युएट करेंगे टेस्ट की बेस पे, तो एग्जाम्स की बेस पे, तो ही इसका आइडिया होगा कि वो कितना इफेक्टिव है। 55, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास इज हॉरिजॉन्टल। 56, curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the direction of school, whether in the classroom or not. तो ये जो statement है, it was presented by Hilda Taba. 57, intelligence level of gifted students is 140 and above, यानी IQ level इनका 140 and above है, यानी जिनके पास गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस है। 58, इफ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज इक्लेक्टिक मेथड।
59. Summative evaluation takes place after regular interval. ओके जी, यानी करिकुलम्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने के कुछ वक्त के बाद जो है वो जितना उन्होंने करिकुलम अब तक फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो है वो इवेल्युएशन होती है, असेसमेंट होती है। 60. During demonstration, topic should be presented in a debatable style, ताकि जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चनिंग और आंसरिंग भी होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली उसको जो है वो प्रेजेंट किया जा सके। 61. In discovery methods of teaching, the students are generally forced to work as scientists. This statement is propounded by Armstrong ने ये statement propose की थी। 62. The central principle of heuristic method is learning by doing. 63. Percentage of knowledge gained through observation, यानी ऑब्जर्व करके देख के किसी चीज को हमें कितना नॉलेज गेन करते हैं हम, 75%. 64. Keeping in view the type of students in a class are generally grouped as. ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 ऑप्शंस थी, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज। 3 ऑप्शंस थी, ए, बी एंड सी। ऑल ऑफ दीज, ये डी ऑप्शन है, सो इट वाज करेक्ट। 65. Rote learning is a demerit of subject-centered curriculum. 66. The most important component of lesson plan is objective. 67. Classroom management creates a set of dash used in an organized classroom environment. Expectations के classroom management जो है it creates a set of expectations. 68. Classroom management revolves around teachers and students dash and actions that influence students' behavior in the classroom. तो क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एटीट्यूड, तो ये इनके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और उनका बिहेवियर कैसा होगा क्लासरूम में। तो टीचर और स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है यही जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा स्टूडेंट के बिहेवियर को इन द क्लासरूम। 69. टीचर्स विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम, वीक स्किल्स कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव स्टूडेंट आउटकम। 70. Dash is defined as the practice of teaching others to obey rules or norms by using punishment to correct unwanted behaviors. So discipline is defined as practice of teaching others to obey rules. यानी ये एक discipline जो है, कायदे या कानून जिसे हम कहते हैं, तो डिसिप्लिन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं सबको कि उन्हें रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। 71. Dash management is defined as those events and procedures involved in decision to initiate a specific activity for an individual student. तो instructional management जो है इसमें हम क्या करते हैं, इवेंट्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, ऐसे इवेंट्स और प्रोसीजर्स that are involved in decision to initiate a specific activity for individual student. 72. Rules create clear expectations for the children and need to define what an acceptable behavior is. 73. Dash had to minimize behavioral changes in the classroom. So teachers had to minimize the behavioral changes in the classroom and are key to a well-managed and organized classroom. टीचर का ही ये रोल होता है कि उसने कैसे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करना है और एक अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। 74. To be effective, dash need to be something to which the children aspire. To be effective, instructions need to be something to which the children aspire and want. यानी इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स इजीली उसको फॉलो कर सकें। 75. Dash provides a systematic process for categorizing and quantifying attributes and characteristics of the thing that we observe, experience, and report. So measurement provides a systematic process, यानी पैमाइश करना एक systematic process है जिसे हम क्या कर सकते हैं, characteristics और attributes of the students हम उसको observe कर सकते हैं, experience कर सकते हैं, report prepare कर सकते हैं उसकी। 76. The relationship between and among the values in a set is referred to as level of measurement. 77. At the dash level of measurement,
at the ordinal level of measurement, the answer is ordinal. At the ordinal level of measurement, values can be placed into categories that are rank ordered or rated along a continuum, such as from high to low. 78. Dash describes the extent to which we measure what we purport to measure. So validity describes the extent. 79. Dash validity involves making a comparison between a measure and an external standard. So construct validity. 80. Dash reliability involves administering two equivalent forms of questionnaire to the same group on two separate occasions. So test related. 81. Dash is the collection of analysis and interpretation of information about any aspect of a program of education or training as part of a recognized process of judging its effectiveness, its efficiency, and any other outcomes it may have. So इसका आंसर है जी evaluation. Evaluation is the collection of analysis and interpretation. 82. Dash validity is the extent to which a tool appears to measure what it is supposed to measure. Face validity. 83. What are the characteristics of a good measuring technique? Reliability are the characteristics of a good measuring technique. 84. Which is the technique of investigation involving face-to-face conversation? तो ये interview है जिसमें face-to-face conversation यानी बातचीत होती है. 85. Dash type of educational research does not make accurate predictions. तो descriptive जो educational research है उससे accurate predictions हम नहीं उसका अंदाजा लगा सकते. 86. The case study is the study of a single individual. 87. A set of questions asked and filled in by the interviewer in a face-to-face situation with another person is called a schedule. 88. What type of statistical data are used in educational research? तो इसके लिए दो options थी. A is the descriptive statistical analysis and B is the inferential statistical analysis. और हमारे पास both answer है, both A and B. 89. What is the meaning of null hypothesis? तो इसमें भी हमारे पास दो options हैं. इसका मतलब होता है difference between two parametric mean is 0. And second B option है जी, the difference is due to error in sampling. So both is correct. 90. National Education Commission in 1959 was established under the headship of S.M. Sharif. 91. Dash is responsible for accreditation of teachers' education in Pakistan, NACTE. 92. National Education Policy 1970 was headed by, यहाँ पे आपके पास जो options थी उसमें से correct option नहीं था, correct name mention नहीं था, so that's why none of these. 93. Private educational institutions were nationalized under, तो इसमें भी आपके पास correct option मौजूद नहीं थी, so that's why none of these is your answer. 94. Under National Education Policy 1972, free education was recommended up to class 10th. 95. Open University was established under the policy 1972. 96. The focus of National Education Policy 1978 was on both Islamic values and ideology of Pakistan. तो ये दो options थी आपके पास, Islamic values and ideology of Pakistan. So both is correct. 97. If counseling service is to gain understanding of oneself, follow-up is to keep in constant touch with former student. 98. In a class, there are children who usually get out of social circle. How do you describe these children? तो यहाँ पे आपके पास answer correct option मौजूद नहीं थी, so that's why none of these. 99. For the counseling service to be effective, the school administrator should familiarize himself with the nature, goals, and principles of guidance. 99 के बाद जी 100. What is the ultimate aim of counseling for the individuals to attain? इसमें भी correct option मौजूद नहीं थी, so that's why none of these is your answer. So ये हमारे पास जो है वो complete paper है जी FPSC SST का, that was conducted in 2022. Hope you liked the video. इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. Until then, अल्लाह हाफिज.